ॐ वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलादरुटात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अब आता भवाटवी का वर्णन और रहुगण का संशयनाश होना। ब्राह्मणा उवाच दुरत्यये ध्वन्यजया निवेशितो रजस्तमासत्त्वविभक्तकर्मणे स एष सार्धोर्ध्वपरपरिभ्रमन् भवाटवीं याति न शर्मविन्दति यस्यामिमेषं नरदेवदस्यव सार्धं विलुम्बन्ति कुनायकं बलात् गोमायौ यत्र हरन्ति सार्धिकं प्रमत्तमावेश्य यथोरणं मृगा प्रभूतवीरोऽत्र तृणगुल्मगह्वरे कठोरदंशैर्मशकैरुपद्रुतः क्वचित् गन्धर्वपुरं प्रपश्यति क्वचित् सुरयोर्मुखग्रहं निवासतो यद्द्रवणात्मबुद्धिस्ततस्ततो धावते भूअटव्याम् क्वचिच्चावात्योत्थितपांशुधूम्रा दिशो न जानाति रजस्वलाक्षाम् अदृश्यझिल्ली स्वनकर्णशूला उलोकवाग्भिर्व्यथति व्यथितान्तरात्मा अपुण्यवृक्षान् श्रयते क्षुधार्दितो मरीचितो यान्यभिधावति क्वचिद्द्वितीयाः सरितोऽभियाति परस्परं चालसते निरन्धः आसाद्य दावं क्वचिदग्निस्तप्तो निर्विद्यते क्वच यक्षैर्हृतासु सूर्यऋतस्व क्वच निर्विणच्चेता सूर्यऋतस्व क्वच निर्विणच्चेतान् क्वच निर्विण्णचेता शोचन् विमुह्यन्नुपयाति कश्मलम् क्वचिच्च गन्धर्वपुरं प्रविष्टा प्रमोदते निर्वृतमन्नमुहूर्तम् चलन् क्वचित् कण्टकसर्गसराङ्घ्रिर्नागारुरुक्षुर्विमना इवास्ते पदे पदेभ्यन्तरवन्यनार्दिता कौटुम्बिकः क्रुध्यते वैजनाय क्वचिन्निकीर्णो जगरायिनो जनो नावेति किञ्चिद्विपिने पविद्धा दष्टस्माशीते क्वचिदन्तसूकरि रन्ध्रोऽन्धकूपे पतितस्तमिश्री कर्हि स्म जिन्सूद्ररसान् विचिन्वं स्तन्मक्षिकार्व्यथितो विमानः तत्रातिचिकित्सा प्रतिलब्धमानो बलाद्विलुम्पन्त्यत तं ततोऽन्ये क्वचिच्चासीता तपवादवर्षा प्रतिगृहां गर्दमनीष आस्ते क्वचिन्मिथो विपणयन् यच्च किञ्चित् विद्वेषमृच्छत्युत विद्वेषमृच्छत्युतवित्तशाठयान् क्वचित् क्षीणधनस्तु तस्मिन् शय्यासनस्थानविहारहीना
याचन् पराद प्रतिलब्धकामः पारक्यदृष्टिर्लभतेव मानम् अन्योन्यवित्तव्यते सङ्गवृद्धा वैरानुबन्धो विवहन्मितश्चाधन्यमिस्मिन्नुरकृच्छ्रिवृत्तः बाधोपसर्गैर्विहरन् विपन्ना तास्थानविपन्ना न जाते सहितत्र तत्र विहाय जातं परिगृह्यदार्थ आवर्ततेऽद्यापि न कश्चिदत्र वीराधनः पारमुपैति योगं वनश्विनो दिग्गजेन्द्रा ममेति सर्वे भुवि बद्धवैराः मृधे शरीरन्न तद्वदन्ति यन्यस्तदण्डो गतवैरोभियाति प्रसज्यते क्वापि लवलता भुजाश्रयास्तदा श्रयाभ्यक्तपदद्विजस्प्रियः क्वचित् कदाचिद्धरिचकृतस्तस्त्रशं तस्त्रशन् सख्यं विधत्ते तैर्वञ्चितो हंसकुलं समाविशान्नरो नरोचयन् शीलमुपैति वानरान् तज्जातिरासेन सुनिर्वृतेन्द्रिया परस्परोद्वीक्षणविस्मृता वधि द्रुमेषु संरंस्यन् सुतदारवत्सलो व्यवायदीनौ विवशबन्धने क्वचित् प्रमादान् गिरिकन्दरे पतन् वल्लीं गृहीत्वा गजभीत आश्रितम् अतः कथञ्चित् स विमुक्तापदः पुनश्च सार्धं प्रविशत्यरिन्दरम् अधन्यमुस्मिन्न जया निवेशितो भ्रमञ्जनोऽद्यापि न वेद कश्चन रघुगणो त्वमपि यध्वनोऽस्य सन्न्यस्तदण्डाकभूतमैत्रः असज्जितात्मा हरिसेवयासितं जानासि मादाय तरातिपारं राजोवाच अहो निर्जन्मा किल जन्मशोभनं किं जन्मभिस्त्वपररप्यमुस्मिन् न यदृशैकेशय सकृतात्मनां महात्मनां वा प्रचुरसमागमः न ह्यद्भुतं त्वच्चरणं राजोवाच अहो निर्जन्माखिलजन्मशोभनं किं जन्मभिस्त्वपररप्यमुस्मिन् न यदृशैकेश यथा कृतात्मनां महात्मनां वा प्रचुरसमागमः न ह्यद्भुतं त्वच्चरणाम्बुजरेणुभिः तांससो भक्तिरधोक्षजैमला मोहोर्दिकाद्यस्य समागमाच्च मे दुस्तर्कमूलोपातो विवेकः नमो महद्भ्योऽस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आवटुभ्यः ये ब्राह्मणा गामवधूतलिङ्गा चरन्दितेभ्यः शिवमस्तु जाज्ञाम् श्रीशुकवाच इत्येवमुत्तरा मातः स वै ब्रह्मर्षिसुता सिन्धुपतया आत्मसत्तत्त्वं विगण्य यतः परानुभावः परमकारुणिकतयोपदिश्य रघुगणेन सकरुणामभिवन्दितचरण आपूर्णाणव इव कर्णयोन्म्यासयो धरणीमिमां विचचार स्ववीरपतिरपि सुसृजनमवगत परमात्मा सत्तत्त्व
आत्मन्यविद्याध्यारोपितां च देहात्मा मतिं विसर्ज एवं हे नृप भगवदाश्रितानुभावा राजोवाच यो हवा यद् बहुविधा महाभागवत् त्वया भीतः परोक्षेण वचसा जीवलोका भवाब्ध्वा सहार्या मनीषया कल्पितविषयो नाञ्जसा व्युत्पन्ना लोकसमधिगमः अथ तदेवैतद्दूरवगमं समवेतानुकल्पेन निर्दिश्यतामिति। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कन्धे त्रयोदशोपारायण सत्यानन्दमं गामा पूर्णानन्दमनोरथा चतुर्दशोपारायण भवाट्टवी का स्पष्टीकरण। सह होवाच ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सह होवाच स य एष देहात्मम मानिनां सत्पादे गुणविशेषविकल्पित कुशल समवहार विनिर्मित विविध देहावलिभिर्वियोग संयोगाद्यानादि संसारानुभवस्य द्वारभूतेन षडिन्द्रियवर्गेण तस्मिन् दुर्गाध्ववद सुगमै ध्वन्यापदिता ईश्वरस्य भगवतो विष्णोर्वशवर्तिन्या मायया जीवलोकोऽयं यथा वणिक्सार्थोऽर्थपरः स्वदेह निष्पादितकर्मानुभव शमशानवद शिवतमायां संसाराडभ्यां गतो नाद्यापि विफल बहुप्रतियोगे हस्ततापोपशमनिं हरिगुरुचरणारविन्द मधुकरानुपदवीमवरुन्धे यस्यामोहवा एते षडिन्द्रियनामानः कर्मणा दस्य वा एव ते तद्यथा पुरुषस्य धनम् किञ्चिद्धर्मोपैकं भवकृच्छ्रार्धिगतं साक्षात् पुरुषाराधनलक्षणो योऽसौ धर्मस्तं तु पराया उद्धाहरन्ति तद्धर्म्यं धनं दर्शनस्पर्शन श्रवणा स्वाधनावघ्राण संकल्प व्यवसाय गृह ग्राम्योपभोगेन कुनाथस्य जितात्मनो यथा सार्धस्य विलुम्बन्ति। अथ च यत्र कौटुम्बिका दारापत्यादयो नाम्ना कर्मणा मृगशृगाला एवानिच्छतोऽपि कदर्यस्य कुटुम्बिनी उरणकवत्संरक्ष्यमाणं मिषतोऽपि हरन्ति यथा ह्यनुवत्सरं कृष्यमाणमप्यदग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेवावपनकाले गुल्मतृण वीरुद्भिर्गह्वरमिव भवत्येवमेवाग्रहाश्रमः कर्मक्षेत्रं यस्मिन् न हि कर्माण्युत्सीदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसतः तत्र गतो दंसमशकसमापसदैर्मनुजैः शलभः शकुन्तलतस्कर मुस्कारिभिरुपरुध्यमानवः प्राणः क्वचिद् परिवर्तनमानो स्मन्निग्धवन्याविद्याकामकर्मभिरुपरक्त मनसानुपपन्नार्थं नरलोकं गन्धर्वनगरमुपपन्नमिति मिथ्यादृष्टिरनुपश्यति तत्र च क्वचिद्दाता पोदकनिभान्न
निभान्न विषयानुपधावति व्ययवाया दिव्यसनलोलुपः क्वचिच्चाशेषदोषनिसलनं पुरीशविशेषणं निर्मितमतिः सुवर्णमुपादित्य सत्यग्निः कामकातर इवोल्मुखपिशाचम् अथ कदाचिन्निवासपानि यद्रवणाद्यनेकात्मोप जीवनाभिनिवेशयितस्यां संसाराडभ्यामितस्ततः परिधावति क्वचिच्च वात्योपम्यया प्रमदयारोह मारोपितस्तत्कालरजसा रजनीभूता इव साधु मर्यादो रजस्वलाक्षोऽपि दिग्देवतादिरजस्वलमतिर्नः विजानाति क्वचिन्सकृन्दवगते वेतत्य स्वयंवरा विद्यानेन विभ्रंसित स्मृतिस्तयैव मरीचितो या प्रायांस्तानेवाभिधावति क्वचिदुलुगझिल्लीश्वन वदति परुषरभशाटोपं प्रत्यक्षं परोक्षं वा रिपुराजकुलनिर्भरसिद्धीनाहरिव्यथिते कर्णमूलहृदयः स यदा दुग्धपूर्वसुकृतस्तदा कारस्करकाकतुण्डाद्य पुण्यद्रुमलता विशोदपानवधूभयार्धशून्यं द्रविणाञ्जीवन्मृतानुसयं जीवन्म्रियमाणा उपधावति एकदा सत्प्रसङ्गान्नीकृतमतिर्विदकश्रोत्रास्कलन वधूभयतोऽपि दुःखदं पाखण्डमभियाति यदा तु परबाधायान्धः आत्मनः नोपनमति तदा हि पितृपुत्रपरिस्मरः पितृपुत्रान् वा स खलु भक्षयति क्वचिद्दासाद्य गृह्यं धाववत्प्रियार्था विधुरमशुकोर्दर्गं शोकाग्निना दह्यमानो मृतं निर्वेदमुपगच्छति क्वचित्कालविषमितः राजकुलरक्षसापहृतः प्रियतमधनासुः परमृतक इव विगतजीवलक्षणा आस्ते कदाचिन्मनोरथो अपगत पितृपितामहाद्य सत्सदिति स्वप्ननिर्वृत्तिलक्षणमनुभवति क्वचिद्ग्राश्रमः कर्मचोदनादि भरगिरिमारुरुक्षमाणो लोकव्यसनकर्षितमनः कण्टकशर्कराक्षेत्रं प्रवेशन्निवसीदति क्वचिच्च दुस्सहेन कायाभ्यन्तरवह्निना गृहीतसारा स्वकुटुम्बया क्रुध्यति सा एव पुनर्निद्रा जगरे गृहीतुन्धे तमसि मग्ना शून्यारण्या इव शेतिः नान्यत्किञ्चन वेदशव इव पविद्धः कदाचित् भग्नमानान् दृष्टो दुर्जनदन्धसुखैरल्लब्धनिद्राक्षणो व्यथितहृदयेनानुक्षीयमाणः विज्ञानोन्धकूपे पतति करिष्मः चित्तकामः मधुलवान् विचिन्वन् यथा परद्रव्याण्यः वरुन्धानो राज्या स्वामिभिर्वा निहत पतत्यः पारि निरये अथ च तस्मादुभयथापि
हि कर्मास्मिन्नात्मनः संसारावपनमुदाहरन्ति मुक्तस्थो यदि बन्धादेवदत्ता उपाच्छिनति तस्मादपि विष्णुमित्र इत्यनवस्थितिः क्वचिच्च शीतवाताद्यके द्यनेकाधिदैव भौतिकात्मीयानां दशानां प्रतिनिवारणे कल्पो दुरन्तचिन्तया विषण्ण आस्ते क्वचिन्मिथो व्यवहरन् यत्किञ्चिद्धनमन्येभ्यो वा कागणिकामात्रमप्यपहरन् यत्किञ्चिद्वा विद्वेषमेति विदसाक्ष्यात् अध्वन्यमुस्मिन्निमा उपसर्गास्तथा सुखदुःखारागद्वेषभयाभिमानप्रमादोन्मादशोकमोहलोभमात्सर्ये ईर्ष्यावमानाच्युत्पिपासाधिव्याधिजन्मजरा मरणादयः क्वापि देवमायया स्त्रिया भुजलतोपगूढा प्रस्कन्ना विवेक विज्ञानो यद्विहारः गृहारम्भा कुलहृदयस्तदाश्रयावसक्तसुतदुहितृगिरत्र भासितावलोक विचेष्टितापहृदयः आत्मानमज्जितात्मा पारेन्धि तमसि प्रहिणोति कदाचिदीश्वरस्य भगवतो विष्णुश्चक्राद परमाण्वादिः द्विपरार्धः पवर्गे कालोपलक्षणात् परिवर्तितेन वयसा रङ्गसः हरत आब्रह्मतृणस्तम्बादीनां भूतानामनिमिषतो मिषतां वित्रस्तहृदयस्तमेवेशरं कालचक्रानिजायुधं साक्षात् भगवन्तं यज्ञपुरुषमनाधृत्य पाखण्डदेवताः कङ्कगृध्रवटप्राया आर्य समयपरिहृतां साङ्केत्येनाभिधत्ते यदा पाखण्डीभिरात्मवञ्चितैस्तैरुवञ्चितो ब्रह्मकुलं समावसंस्तेषां क्षीरमुपनयनादिश्रोतृष्णार्थकर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञपुरुषस्याराधनमेव तदरोचयन् शूद्रकुलं भजते निगमाचारे शुद्धितो यस्य मिथुनी भावा कुटुम्बभरणं यथा वानरजातिः तत्रापि निरवरोधा स्वैरेण विहरन्नति नदी कृपणा बुद्धिरन्योन्यामुखनिरीक्षणादिना ग्राम्या कर्मणैव विस्मृतकालवधि क्वचिन्द्रुम वदेहिकार्थेषु गृहेषु रंस्यन् यथा वानरा सुतदारवत्सरो व्यवायक्षणः एवमध्वन्यावरुद्धानो मृत्युगजभया तमसि गिरिकन्दरप्रायै क्वचिच्छीदवाताद्यनेकदैविकभौतिकात्मीयानां दुःखानां प्रतिनिवारणे कल्पो दुरन्तविषयन् आस्ते क्वचिन्मिथो व्यवहरन् यत्किञ्चिद्धनमुपयाति वित्तसाठ्येन
क्वचित् क्षीणधनः शय्यासनासनाद्युपभोगविहीनो यावदप्रतिलब्धा मनोरथोपगत गतादाने वसितः मतिस्ततस्य तत्त्वमानादीनि जनादभिलभते एवं वित्तव्यतिसङ्ग विवृद्धः वैरानुबन्धोऽपि पूर्ववासनया मिथ्या उद्वाहत्यथापवहति एतस्मिन् संसाराध्वनि नानाक्लेशोपसर्गा बाधिता आपन्ना विपन्नो यत्र यस्तमूहा वावेतरस्तत्र विसृज्य जातं जातमुपादाय शोचन्मुह्यन् बिभ्यद्विवदनं क्रन्दन् संहृष्यन् गायन्नह्यमानः साधु वर्जितो न वा वर्ततेऽद्यापि यत् आरब्ध एष नरलोकसार्थो यमध्वनः पारमुपदिशन्ते यदिदं योगानुशासनं न वासयेत दवारुन्धते यन्यस्तदण्डाः मुनया उपशमनशीला उपरतात्मनां समवा गच्छन्ति यदपि दिग्गी भजिनो यज्विनो वै ये वै राजर्षया किं तु परं मृधै सहिरनश्यामेव ममेयमिति कीर्त वैरानुबन्धायां विसृज्य स्वमुपसंहृता कर्मवल्लीमवलम्ब्य तत आपदः कथञ्चिन्नर काद्विमुक्ता पुनरप्येवं संसाराध्वनिवर्तमानो नरलोकसार्थमुपयाते एवमुपरि गतोऽपि तस्येदमुपगायन्ति आर्षभस्यैः राजर्षीन् मनसापि महात्मना नानुवर्त्मार्हति निरपो मक्षिकेव गरुत्मतः यो दुस्त्यजान्दारसुतान् सुहृद्राज्यं हृदिस्पृशां जहो युवेव मल्वद्दु तमश्लोककलाश्लषः यो दुस्त्यजाञ्चितिसुदस्वजनार्थदारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरे सदयावलोकं नेच्छन्निर्पस्तदुचितं महतां मधुवित् सेवानुरक्तमनसामभवोऽपि फल्गु यज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय योगाय साङ्ख्यशिरसे प्रकृतीश्वराय नारायणाय हरये नमयेन्द्राणम् आजन्मृगत्वमपि समुदाजहर यैदं भागवत सभाजिता वदात् गुणकर्मणो राजर्षिर्भरतस्यानुचरितं स्वस्त्ययनमायुष्यं धन्यं यशस्यं स्वर्गायापवर्गाय स्वर्गयापवर्गया वानु शृणोत्याख्यास्त्यभिनन्दति च सर्वा एव शीशा आत्मना आशास्ते न काञ्चन परत इति य इदं भागवत सभाजिता वदात् गुणकर्मणो राजर्षे भरतस्यानुचरितं स्वस्त्ययनमायुष्यं धन्यं यशस्यं स्वर्गापवर्ग्यं वानुशृणोत्याख्यास्यत्यभिनन्दति
च सर्वा एवाशीषा आत्मन आशास्ते न काञ्चन परत इति। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भरतोपाख्याने पारोक्ष विवरणं नाम चतुर्दशो पारायण पूर्णाः। धर्म की जय वो अधर्म का नाश हो, प्राणी मर्द भावना विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय, गौ माता की रक्षा जय कर शेरवाले का बोलो सांझे दरबार की जय।